नमस्कार, स्वागत जनाई आरंभ करुछु भुवनेश्वर IMMT परिसर रे अनुष्ठित G20 तृतीय शिक्षा कार्यकारी परिषद बैठक भविष्यतर कार्यशैली और दक्षता प्रदर्शनी द्वितीय दिवसर बेतार विवरणी। इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर ठारे गतकाली थिला G20 शिक्षा वर्किंग ग्रुप रो तृतीय बैठक परिप्रेक्षी रे चलिथिबा भविष्यतर कार्यशैली और दक्षता प्रदर्शनी द्वितीय दिवस। सम्मेलन रे मुख्य अतिथि भाव में केंद्र दक्षता विकास और उद्यमिता एवं इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति राष्ट्रमंत्री राजीव चंद्रशेखर जोगदेई कार्यक्रम को उद्घाटन करथिले। अन्यमानक मध्यरे दक्षता विकास और उद्यमिता मंत्रणालय सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी, CII भारप्राप्त अध्यक्ष तथा TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस रो उपसभापति आर दिनेश, डेलोइट रो भागीदार NSN मूर्ति एवं अशोक लेलैंड ऑटोमोबाइल कंपनी रो कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निर्देशक विपिन सौंधी प्रमुख योगदान करथिले। एतद व्यतीत एथिरे विभिन्न सरकारी संस्था, प्रजुक्ति विद्या कंपनी और दक्षता विकास क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तिविशेष छात्र छात्री अंशग्रहण करथिले। कार्यक्रम प्रारंभ में मुख्य अतिथि मान्यवर राष्ट्रमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर आनुष्ठानिक भाव में प्रदीप प्रज्वलन करी एहार शुभ उद्घाटन करथिले। पारंपरिक भाव में उत्तरीय द्वारा मंचासीन अतिथि मानंकु संबर्धित करा जायथिला। समस्तंको स्वागत जनाई CII भारप्राप्त अध्यक्ष तथा TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस रो उपसभापति श्री आर दिनेश निज वक्तव्य कहले। Sri Rajiv Chandrasekhar, Honorable Minister of State for Skill Development, Mr. Atul Kumar Tiwari, Secretary, NSN Murthy, Vipin Sondhi, participants from the government, academia, industry, members for the press, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to welcome you to the day 2 of the G20 Percussive events. As all of you know, today's focus is on transforming logistics for the coastal economies, especially with a focus on sustainability. Let me first warmly welcome the Honorable Minister, who has not only been somebody at the forefront in terms of the new age technology focus, but also making sure that the necessity of the skill and the digital support for each of these sectors are being provided for. So thank you very much, sir, for sparing your time and being here with us. We look forward to hearing from you on how you see the evolution of this sector, not just in terms of the focus on the skill development, but also on how digitization can make a big difference to this sector, and how do you see the focus moving forward. In fact, I thought I should share at this occasion with you that already India has made progress in terms of moving up in terms of the world ranking, and we have moved up to 38th position from 44, which we were last year. And I believe, sir, that with this digitization taking place, India should be amongst the top 10 countries very soon. That's something which I think we hope will come out of the outcome of all of these. I also would like to welcome Mr. Tiwari. He is somebody whom we are going to work with, and we have been working with closely to make sure that the skill development goes hand in hand. And as we were discussing just before the meeting, we look forward to making this a joint partnership for the future success of this sector and the growth of this. I am glad that we have not only participants from the industry, but also from the academia, and especially those who are going to make the future of India happen. And as part of the G20 Percussive events, we very much look forward to receiving and developing a roadmap on how India can represent to the rest of the world on what we need to do to make not only the life of ourselves better,
but make the life of everyone better, which is what we will be speaking about during the course of the day. I think there are 4 areas which we are going to be focusing on. One is obviously how do we develop the enabling infrastructure. The second is how do we make sure the infrastructure is utilized to the best of its capability by using digital. Third is how do we make sure that whatever we are developing is sustainable, is coming towards net zero, and making sure that we can support the marine life and other activities, especially in the coastal regions, to make sure that doesn't get harmed. And finally, and most importantly, make sure that we create better wealth and better health for everyone associated with this sector. With that, I would once again welcome all of you to this very important event and look forward to getting good outcomes out of this. Thank you and all the best. डिलॉइट भागीदार एनएसएन मूर्ति तटीय अंचଳରେ କିପରି ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ସମେତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବୃତ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହୋଇପାରିବ ତଜ୍ଜନିତ ସରକାରୀ ନିୟମ ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଲେ One of the most important elements which our Honorable Prime Minister always been talking about is how do we actually rapidly create the ecosystem and the economy around the coastal. We have the 7,000 plus kilometers of coastal belt, including the mainland as well as the islands, and we have about 4 million fishermen who are actually having a livelihood around there. But that's not only limited. We have about 200 ports, out of which a maximum number of them are logistics driven. India has a massive potential for developing this coastal areas. For that, government has already initiated programs which are like Sagarmala and others, which have been creating a lot of future-proof infrastructure. So how we are actually trying to do this entire workshop is we are looking at what are the investments the government is doing and how the private sector is adapting them and incorporating them in their strategy for growth as the panel 1 where we are looking at the future infrastructure in the coastal area. But the most important element of this entire thing is while we do rapidly develop the coastal infrastructure, it's important that we see the climate impact of that in the coastal area. I'll just take a small piece. About the same time last year, sir, the Honorable Finance Minister, she reached out to us saying that coastal sea erosion is extremely important. And Deloitte, our global chairman, said that let's adopt 2 of the island villages in the state of Andhra Pradesh. And we started looking at sea erosion impact. And how do we create skilling, infrastructure, and other economic development activities in those regions? Because there is a massive 250 million people are dependent on the coastal region, and sea erosion is there in India, which is very, very evident. 34% of our coastal area is impacted with sea erosion, which is out of 7,500 kilometers. If you look at 34% is a huge number. So the second session focuses primarily on the climate change. How do we use it positively? How do we actually create skilling, disaster mitigation plan on all those things, and thereby helping the coastal region and economic development? The third part of it is, which is actually I think close to the heart of yourself, sir, as well as the Prime Minister, is net zero. How do we use various tools, techniques, technologies, people, processes to make India the forefront in adopting a net zero, what you call vision? Now that session will deeply debate on how do we actually take alternative fuels like hydrogen into the coastal area? How do we actually look at better farming mechanisms to run this? And the final session, and there's nothing can be completed without looking at the core livelihood of the people in coastal area, which is aquaculture and the fisheries. The final session we deliberate upon on the aquaculture. How do we create that a better economic infrastructure there? It's a thriving business. We are the second largest fishery industry in terms of the catching the fishes. So the panel will deliberate on what can be done and thereby use the technology. And there's a new set of technology. And why I'm deliberating on technologies, I see the kind of passion you have shown on the technology side. Smart fishing is the new area which has come in. ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଚିବ ଅତୁଲ କୁମାର ତିୱାରୀ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ଏକତାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ଏକତା ଓ ସତତ ବିକାଶର ଆହ୍ୱାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र हमें दिया, इसका अर्थ ये हुआ और उन्होंने ऐसा कहा भी कि we have to focus on global good, be it peace, unity or sustainable development. And as you can imagine, it has a deep
contact with the technology and the way the world is progressing. This G20 education group has a strong focus on future of work and how the mega trends like technology, demographics, climate change, etc. are changing the key sectors of the economy. Logistic is a very critical element of this, and it holds the key to make India competitive, making India competitive globally. In this regard, our Honorable Prime Minister had said that from 13 to 14% logistic costs, we should aim to bring it to a single digit as soon as possible. This is a low-hanging fruit if we have to become globally competitive. And as you know, that logistic, particularly in the context of the coastal economy, and as our Honorable Minister Dharmendra Pradhanji was saying yesterday about the mining sector in Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha, how it can be compared to Australia in terms of mining, use of technology and logistical costs. केन्द्र दक्षता विकास और उद्यमिता एवं इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति राष्ट्रमंत्री राजीव चंद्रशेखर समारोह को संबोधित करी कहले भारतीय अर्थनीति रे सुधार आसीछि एबे एहा विश्वर पंचम स्थान रे पहुंचीछि आगरो एठारे लॉजिस्टिक्स खर्च अधिक थिला व्यावसायिक कारोबार प्रतिद्वंदितापूर्ण नथिला आज विश्वर बड़ बड़ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रोनिक्स मोबाइल और अन्यान्य उत्पाद निर्माता भारत रे सेमानंक सामग्री निर्माण रप्तानी बिक्री पाई आग्रही हेउछन्ति श्री राजीव चंद्रशेखर निज वक्तव्य रे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र रे समन्वय उपकूल अर्थव्यवस्था और दीर्घस्थायित्व भली गुरुत्वपूर्ण विषय रे आलोचना करथिले आप सबको मेरा नमस्कार. The conference is of course about the future of work and skilling, and there is a sub context to it that has been beautifully phrased. It is at the intersection of logistics, coastal economies, sustainability, skills. So this is an interesting opportunity to not just to talk about skills, but skills in the context of logistics. Not just to talk about logistics, but talk about logistics in the context of coastal economies. And not just to talk about the coastal economy, but to talk about that in the context of sustainability. We are really talking about future and work and skilling, but talking about future of work and skilling in the context of these trends, in the context of logistics becoming more and more important, in the context of coastal economies becoming more and more important, and sustainable growth becomes certainly one of the articles of faith in how we shape our future, how we shape our nation's future and the world's future. Shared with you my views on why logistics is so important and why logistics is really in all the discussion that we have about semiconductors, electronics, technology, internet. Sometimes we lose the fact that logistics is going to be as exciting an area full of opportunities for young students today in the coming years. Because as I think Dinesh mentioned again, logistics is going to be also about technology enablement. Logistics is also about physical, modern infrastructure like railways, roads, ports, container trains, container parks, logistics parks. There is so much scope for investment, there is so much scope for entrepreneurship and employment that I would certainly argue that along with all of the other opportunities in tech, logistics ranks up there as the sunrise sector for investors, for global partners and for academics and students to be focused on. प्रदर्शनीर आकर्षण को गुरुत्व दे अशोक लेलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बिपिन सौंधी निज वक्तव्य रे कहले There are so many interesting facets to this exhibition, and specifically for me the game of Sherpa Raju, recreated as Buddhi Yoga, was particularly interesting. The future of work and the criticality of education and appropriate skilling has been very well showcased in the exhibition. We had 3 very interesting and engaging panel discussions, and I'll just pick one point each, Honorable Minister. On semiconductors, it was said that this is the most ever holistic attempt by the government to create an ecosystem that is the cause for India's future. And this, the government didn't say it, the private sector said it. So congratulations on that as well. The session on digitization was all about business, benefits, challenges, automation, workforce and economy. Session on new age startups was engrossing because we had
4 startup founders from Orissa, 3 other panelists, all built multi-million dollar businesses. And I was very pleased that there were questions, in-depth questions from the students and young people in the audience. So I would like to congratulate and compliment the vision of the government in bringing the troika of policymakers, industry and academia together on a single platform to discuss and provide solutions that are critical, but the request is that this must be continued. IMMT परिसररे अनुष्ठित दक्षता प्रदर्शनी अवलोकन अवसररे विभिन्न स्टॉलर व्यक्तिविशेषଙ୍କ सहित आमर कथोपकथनर ये हेउछि किछि झलक। श्रोता बंधु ये जो तृतीय शिक्षा कर्मनियुक्ति ग्रुप बा G20 रो जो आयोजन है एठी 23 तारिख रु 28 तारिख पर्यंत एठारे गोटे प्रदर्शनी मध्य करा जायछि किभଳି भाବରେ भविष्य कार्यपंथा ग्रहण करा जिवो एवं ता सहित रोजगार रो संभावना केमति सृष्टि होई परिबो दक्षता माध्यम रे ता उपरे गुरुत्व दिया जायछि। आसंतो आमे देखुछु एठी जोठी वर्तमान से जो एग्जीबिशन रे अच्छो गोटे कृषि क्षेत्र में जो सिंचन पाई कृषि को जो वर्तमान सरकार गुरुत्व दौरान ड्रोन माध्यम रे किभଳି सिंचन करा जिवो विभिन्न प्रकार रासायनिक सार हो बा कीटनाशक हो से विषय में जानिया पई यह कौन आपका परिचय दीजिएगा। नमस्कार, मैं विकास कुमार पांडे वागो ग्रीन की तरफ से बात कर रहा हूँ सर। मैं G20 जो थर्ड वर्किंग ग्रुप जो समिट है ये एग्जीबिशन होता है, इसमें आप पार्टिसिपेट किए हैं। जी सर। क्या फोकस किए हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्यों क्या इनोवेशन है, क्या न्यू टेक्नोलॉजी देख रहे हैं? सर हम जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है किसानों को अवेयरनेस करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। तो जो हम परंपरागत तरीके से पहले जो खेती करते थे उसके मतलब जो भी नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं इससे हमको किसानों का पैसा, समय और हेल्थ जो उसके बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ड्रोन है हमारा जो सर ये 1 एकड़ खेत जो तक 5 से 7 मिनट में स्प्रे कर सकता है ये, और इसमें जो पानी हमारा लगता है सिर्फ 10 लीटर पानी लगता है। जो पहले हम परंपरागत तरीके से 200 या 300 लीटर पानी देते हैं तो वहाँ पर पानी का कंजप्शन जो काफी कम करता है और समय की बचत भी करता है। जैसे किसान भाई इसमें क्या होता है खेतों में जाते हैं तो 75,000 लोग सांप के काटने से मर जाते हैं वहाँ पे। तो इसके द्वारा सर हम खेत में न जाकर खेत के बाहर से स्प्रे कर सकते हैं, इसमें कम समय में कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। अच्छा। खासकर जो युवा हैं अगर वो कोई अगर ड्रोन लेना चाहते हैं तो हम उनको ड्रोन देते भी हैं। बाकी जो युवा इसको लेके जो परचेज ना कर सके ड्रोन तो उनको रेंट की सर्विस भी दे सकते हैं उनको। अच्छा। जी भाड़ा सूत्र में दे सकते हैं। जी सर, भाड़ा। इसका प्रयोग अभी कैसे देख रहे हैं? अभी नया नया शुरू हुआ है सर, नया है अभी तो हमारे से साउथ में ज्यादा चल रहा है, थोड़ा नॉर्थ में डेफिनेट कम है क्योंकि लोग परंपरागत तरीके पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी लोग हमारा भी पॉजिटिव ग्रोथ है जो उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं अभी इसको करने के लिए। अच्छा। और बाकी आगे जाके सर जो ड्रोन का है काम लोग काम आसान करेगा, लोग सीख रहे हैं, देख रहे हैं और आ रहे हैं हमारे पास अभी। अच्छा जी। ये ड्रोन का कॉस्ट कितना आता है अगर एक फार्मर प्रोग्रेसिव फार्मर वो यूज करना चाहता है, एरिया में इसको बढ़ाना भी चाहता है, कैसे आप देख रहे हैं? सर जो ड्रोन का एक नॉर्मल रेट होता है 4.5 लाख से 6.5 लाख तक हमारे पास ड्रोन है ये। अच्छा। बाकी जो फार्मर के लिए हम देते हैं तो सब्सिडी होती है गवर्नमेंट की तरफ से 40% की, और बाकी जो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 50% की देती है गवर्नमेंट सब्सिडी, और जो हमारे एफपीओ होते हैं उनको 75% की देते हैं। बाकी हम जो फार्मर होते हैं जो एक बार में पैसे नहीं दे सकते हैं तो हमको लोन पे भी अवेलेबल कराते हैं ड्रोन उनको। अच्छा। जी। इसका कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है? कॉस्ट इफेक्टिव सर ये है कि जैसे 6.5 लाख का ड्रोन लिया हमने, बाकी जो करंट में स्प्रे का रेट चल रहा है 500 रुपए से 700 रुपए पर एकड़ चल रहा है, तो जो सर ये 1 घंटे में ये 4 से 8 से 9 एकड़ स्प्रे कर सकता है। तो मतलब 1 घंटे के अंदर आप 5 से 6 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। अच्छा। तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में अपना पैसा निकाल सकते हैं स्प्रे करके। ओनली पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर ये यूज कर सकते हैं ना, और उसका ज्यादा भी यूज है? सर अभी जो करंटली ये एग्रीकल्चर का है तो पेस्टिसाइड के लिए होता है प्लस सोलर क्लीनिंग के लिए होता है, सोलर क्लीनिंग कर सकते हैं इससे। अच्छा। तो कनेक्शन इसका वही अगर फील्ड में जाएगा इसका कनेक्शन बैटरी क्या कैसे सुविधा है इसमें? सर इसमें बैटरी की सुविधा है, जो बैटरी इसमें आधे घंटे चलती है, तो आधे घंटे में सर 4 से 5 एकड़ कवर कर सकती है ये। जिसके साथ में 5 बैटरी देते हैं, तो इसे प्लग एंड प्ले लगाइए और चालू करिए इसको, वह सिस्टम होता है सर इसमें। रिमोट सिस्टम से ऑपरेट होता है ये सर। 2 मोड में चलता है, ऑटो मोड में और मैनुअल मोड में। ऑटो में ये होता है कि प्रोग्रामिंग करके रिमोट में दे दीजिए, वो अपने हिसाब से स्प्रे करके अपनी जगह पे आ जाएगा। मैनुअल में आप अपने हिसाब से इसको ड्रोन को चला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मो ना अनिमा दास, मु जनशिक्षण संस्थान कटक डायरेक्टर
अच्छी एठी हमर G20 प्रोग्राम अच्छे जनशिक्षण संस्थान मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट रो गोटे स्कीम आमे पूरा नेशनल लेवल जनशिक्षण संस्थान तरफ रिप्रेजेंट करूछु एठी हमर भुवनेश्वर भी जनशिक्षण संस्थान राउरकेला सबु डिस्ट्रिक्ट रो आसिकरी प्रोडक्ट करछन बेसिकली आमे कटक रो बैम्बो प्रोडक्ट ऊपर बेसी फोकस करिछु जोटा कि फ्यूचर ऑफ वर्क बैम्बो रो कोन हेई पारे आमे आमे सेटा रिप्रेजेंट करिछु कि खाली एमती कुल्ला वंशीय आमे सीमित नाहु आमे विभिन्न प्रकार प्रोडक्ट करिकरी ग्लोबली मार्केट रे आमे पिला माने जेमती रोजगार करि परिबे से अनुसार आमे एटा प्रेजेंट देछु एग्जीबिशन ने नुआ स्केलिंग कौन सब दौरान प्रकृत में दिनक दिन जमी नुआ ज्ञान कौशल सब आवर्तन धारा गोटे रोजगार संभावना बढ़ी आमे कौन करूँ आमे बेसिकली ट्रेनिंग सहित से पूरा कंटिन्यूअस इनकम केमती हम रोजगार केमती बढ़िबो तार बाट बताऊँ जमती धर सिलाई है सिलाई रे आमे खाली टिपिकल सिलाई शिखौनु तादरे बेसी डिजाइनिंग जेतिकी आपण करिवे सेतिकी आपनकर इनकम टा बढ़िबो बैम्बो प्रोडक्ट हैला सेइतरे आमे कारण हमर हैंडीक्राफ्ट आ येरो ट्रेनिंग तो सेई ट्रेनिंग माने देई करी आमे बहुत नुवा नुवा जिनस इनोवेशन करि परछु जोटा कि सेमानकर इनकम एटा बढ़ी जाउछि जनशिक्षण संस्था जोटा आपण रही केमिति कौन व्यवस्था रही जड़े जदि तालीम नापी चाहूँगी बा नुआ ज्ञान कौशल पाइबा चाहूँगी से निजे निज गोटे ठिया चाहूँगी किसी स्किल हम एक्चुअली जनशिक्षण संस्थान यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो गोटे स्कीम जेकोसी पिला पाठ पढ़ू बा न पढ़ू लिटरेट बा इलिटरेट से 10th पास करू बा ड्रॉप आउट हो सी नहीं पारिबो 15 ରୁ 45 वर्ष तार बयस सीमा तो पुओ हंतु बा झियो हंतु समस्त नहीं पारिबे किछि स्किल ट्रेनिंग नहीं पारे विभिन्न प्रकार ट्रेड अच्छी इलेक्ट्रिकल अच्छी हमर कंप्यूटर अच्छी ब्यूटिशियन अच्छी टेलरिंग अच्छी बैम्बो अच्छी मशरूम ग्रोयर अच्छी एग्रीकल्चर रे भी हमें ये अच्छी तो जेकोसी ट्रेनिंग नहीं करी से माने रोजगार क्षम हो पारे से माने गोटे छोट छोट एंटरप्रेन्योर हुंतु बा कौन सी कंपनी रे जे काम करंतु दुईटा जगह से कर पारे जोड़ा सब जोगाजोग स्थापन बा माने केमिति कोन कोठी से नियुक्ति पाइबे एमती व्यवस्था अच्छी केमती कोन अच्छी अच्छी हमर तो वेबसाइट निजर अच्छी हमें प्रमोट भी करूछु प्लस हमें माने विभिन्न प्रकार जेहेतु हमर पुराना संस्था हलानी पिलांग थ्रू रे भी बहुत पिला पळे आसुचंदी आ हमें विभिन्न प्रकार एम्प्लॉयर मानन को डाकी करी भी से मानन को इंडस्ट्री ए पेंकी दउछु प्लेसमेंट ए रे दउछु गोटे टार्गेट रखुथिबे निश्चय केमि देखुचन दे भविष्य प्रति वर्ष टार्गेट कहले प्रति वर्ष हम 1800 पिला को ट्रेनिंग दउ विभिन्न प्रकार विषय रे आ मोर देन 70-80% पिला 90% पिला भी टेलरिंग रे तमरा प्लेस्ड हो जाते अच्छा निजे निज संबल जदि किछि रहिला बा सरकार जो व्यवस्था अछि संबल सुविधा पाई सेटा करिकि मध्ये से माने आत्मनियुक्ति पाउछ आत्मनियुक्ति बेसिकली से माने घरोई महिला तो से घर काम सारिकी 3 घंटा तालीम नेला परे भी से घरे रहिकि भी से माने रोजगार करि परचंदी टेलरिंग मशीन रे पकई करि परचंदी बैम्बो रे से माने निजे ज्वेलरी घरे तयारी करिकि बिक्री पर आमे भी तांको प्लेटफॉर्म देइछि बिक्री करिया पई हमर निजर गोटे यूनिट अछि जनशिक्षण संस्थान ऑफिस रे से माने प्रोडक्ट आनी कि सेठी एग्जिबिट रखी देले आमे सेतकु ताकू बिक्री व्यवस्था करे दो आपन को जोगाजोग करे कोन व्यवस्था अछि हमर सब अवेलेबल गवर्नमेंट पोर्टल रे वेबसाइट रे सबुटी कांटेक्ट हियर अछि एटा आपण जोडी चाहिले भी हम जे कोनोसी जनशिक्षण संस्थान विषय जानिबा को चाहिले सब डिस्ट्रिक्ट रो आपण वेबसाइट रे भी पाई परिबे मने एकादश तारिख घर कटक बांकी तालबस्ता मु बाउंस काम रे आज के 42 वर्ष धरि काम करि आछि मु जाके स्टेट वार्ड पे नेशनल को भी जाई जिंस आ बहुत इनोवेटिव आइडिया रे मु काम किछि करे शिखेबा को पिला मानक तो मोर बहुत आग्रह अछि काम ये काम हैंडीक्राफ्ट काम कले एथरे किछि पढ़ार आवश्यक न थाए साधारण गाँवली महिला माने बा अर्ध शिक्षित जो मैंने पाठशाला पढ़ी पारे से मैं कम पुरई स्वावलम्बी करे जाकि 15,000-20,000 मासिक इनकम करेंगे शिखेबार तो लक्ष्य रही आज अच्छा काली तो ना जेहेतु आम जन स्वावलम्बी हो पारे अन्य स्वावलम्बी कर बहुत स्वप्न अच्छी मुझे विभिन्न संस्थार काम करे जनशिक्षण काम करे डायरेक्ट हैंडीक्राफ्ट काम करे ओरमास काम करे नाबार्डर काम करे एडिटेक्स काम करे एमती विभिन्न संस्था अच्छी जो संस्था मानक जो बाम्बू मिशन रो एमती सब संस्था मानकर बहुत योजना कर आनी आ जेएसएस पर विश्वास मुख्य दे कहीं ना जेएसएस बहुत पूर्वर मु काम करछि एवं आज पर्यंत भी जिते प्रोग्राम हो प्राय गाँ गहली रे बहुत महिला मानक मु शिखेबार सक्षम होइछि आ बहुत पिला भी काम करके बहुत माने बाउंसर से कुला बाउंसर टोकी टांगड़ा से सब छाड़ी एबे बहुत ज्वेलरी पर
ଏବେ ରାୟଗଡ଼ରେ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ କାମ ବି କଲେଣି। ଆଉ ଏମାନେ ଜନସେକଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସେ ଚୁଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ହାର କରୁଛନ୍ତି, ନେକଲେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିକିରି ସେମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତି। ମିନିମମ୍ ଦିନକୁ ଜଣେ ମହିଳା ଘର କାମ କରିବା ସହିତ 500 ଟଙ୍କାରୁ 700 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛି। ଭାରି ଗର୍ବ ଲାଗେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ତ ସୀମିତ ଦରମା ପାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପେଟ ପାଣ୍ଡା ତ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମିଳୁ ବରଂ କିନ୍ତୁ କିଛି ନ ମିଳିଲେ ତଥାପି ମୋ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଡାକିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକି ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମାନେ ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରିବାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ପିଲା କାମ କରିକି ବିକ୍ରି କରିକି ଯେତେବେଳେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୋରି ପିଲା ନା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ 12-13 ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ 7,000 7,500 ଭଳିଆ ପିଲା ସାଫଲ୍ୟ ମିଳିପାରିଛନ୍ତି। ଏ ମୋର ଗର୍ବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଆହୁରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ମୂର୍ଖ ମହିଳା ବା ଅର୍ଥଶିକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କୁ ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ କରିବାର ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତେ। ବାଉଁଶ ବାରିଘରେ ମିଳେ, ବାଉଁଶଟା ବେଶୀ ମାନେ ଖୋଜିବାର ର ମେଟାଲ କିଛି ଅଭାବ ନଥାଏ। ବିକ୍ରି ବଟାର ସୁବିଧା ବହୁତ ଆସିଲାଣି, ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, କିଛି ମେସିନ ନାହିଁ କି ସୁବିଧା ଟିକେ ହେଇଗଲେ ମେସିନ ଫିସିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇବା ଆମକୁ ଟିକେ ଯୋଗେଇ ଦିଆଗଲେ କି ଗୃହ ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗେଇ ଦିଆଗଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହବାର ବହୁତ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁନୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି ଆମେ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କିଛି କାମ କରେଇବା ସେସବୁ ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ କରିଛୁ। ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆଜି ସିଲ୍କ ଥ୍ରେଡର ଯୋଉଟା କାନର ନାକର ବେକର ଆଜିକାଲି ଯୋଉଟା ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ ସେସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନରେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ତିଆରି କରିକି ହଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଖୁସି ଯେମିତି ହେବେ, ଯେମିତି ମାନେ ଦେଖିକି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ସେମାନଙ୍କର ଆସିବ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ତିଆରି କରିକି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଅର୍ଡର ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ କରି ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖେଇକି ତାକୁ ନିହାତି ନିହାତି ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅଛି? ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ଜେଏସ୍ଏସ୍ ତରଫରୁ ଆମର ସାର୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆମେ ସାରଙ୍କ ଇଏରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିକି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ଏକଜୁଟ କରେଇକି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ମହିଳା ମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢିବେ, ନୂଆ ଦକ୍ଷତା ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ନିଗମ ଏନ୍ଏସ୍ଡିସି, ୟୁନିସେଫ୍, ଏନ୍ସିଆର୍ଟି, ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା, ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର, IIM ସମ୍ବଲପୁର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର IMMT ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ G20 ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଓ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସର ଏହା ଥିଲା ବେତାର ବିବରଣୀ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।